Hello students. In this presentation, let us see the remaining topics from the sixth unit. We have already started the Java classes and objects. In that, we have seen what is class, syntax of class, method declaration, fields declaration, how do we create objects, and what are the differences when we create object in C++ and the different when we create the objects in Java. So the thing you must remember that in Java we actually create the references to the actual instance of that class using new keyword. Examples: syntax, the diagrammatical representation, that will help you to understand how the reference is created. Reference variables are created which refers to the actual object of the respective class. Then accessing class members means basically the class members are data fields and the methods of the class. So how we can access them using the object name and dot operator. Here you can see the examples. Then constructors in Java, how we can use them to initialize the object's data fields at the time of their creation using constructor. And then some topics that we covered in brief: method overloading, static members, wherein static variables and static methods both are included, which are also known as class variables or class methods, because they belong to the class overall and they are not a part of objects. That's why they are known as class variables and class methods. And then nesting of methods. Now let us start with the inheritance. So as you are familiar with the concept of inheritance, we have already studied in C++. So same concept is there in Java also. Inheritance, it helps to implement the reusability of the code. Inheritance saves a lot of time while development of the code. So basically deriving a new class from the existing one, this mechanism is known as inheritance. It is the process where one object will acquire the properties of object from another class. So in Java also we are having some types of inheritance. Let us have a look at them. Single inheritance, where there will be only one superclass and one derived class. Hierarchical inheritance, where will be one superclass and more than one subclasses. Multi-level inheritance, where there is a level by level inheritance, means we are having one base class, from that we inherit another class, from that derived class we again inherit one new class. So deriving a class from already derived class, that is a multi-level inheritance. And then multiple inheritance, that is there are several superclasses from which you inherit a new class. So basically when we are performing inheritance, we are going to have one base class, which is also known as superclass or parent class, and from this superclass we inherit a new class, which is also known as subclass or derived class or child class. Okay, so there are multiple names. You should remember these terms. So in Java, we are going to use the terms superclass and subclass in most of the places. Now, in Java, we have only these four types of inheritances, among which multiple inheritance is not directly implementable. So Java does not directly implement multiple inheritance. It is implemented using secondary inheritance path in the form of interfaces. And that we will understand after learning these three inheritance types. Okay, though it is not included in your syllabus, means they have not specified the topic inheritance to be learned, but to learn the interface, they have specified interfaces. So to learn interfaces, you must learn all of this. So students have already
told you that you should not only study the topics that are mentioned in your syllabus, but you study the relative things also to that particular topic. So just not focus on that particular topic, but what is the background that that particular topic comes from, you must also study that. So you must go into depth. Now let us have a look at the syntaxes. When we define a subclass, we need to use this syntax: class, subclass name, extends, superclass name. Okay, and then you need to define here the variables and methods of these subclass. Okay, so here is the superclass name, that is the base class, and here is the subclass name, that is going to be your derived class. Now, what is this extends keywords? Uh, I I know that this word is something new to you because in C++, we have seen that when we inherit a new class from the parent class, we write it like class A colon publicly from B. Okay, so it means that we are inheriting in a particular mode a new class from the parent class. But herein you can see that you are just going to use the word extends, and what this keyword extends signifies that the properties of the superclass are extended now to the subclass. So the fields and methods of the superclass can be used inside the subclass directly. Okay, let us um, see the example of single inheritance in Java so that you will get familiar how the program looks like. Class sum, this is going to be a superclass. A and B, two variables are initialized here, integer type variable 10, 20. In this, I am going to write one method, show one, and print the values of A and B. Now the class ends here. Remember, in Java we don't give semicolons after ending the class. Now class sum2, I want to inherit from sum. So how I should write? Class sum2 extends from sum. Okay, so class sum2 extends sum. Now, this method will include my main method also. I have already told you that to write the Java program, you have to include everything inside the class. So I'm going to write here one superclass, and the main method I'm going to write inside the class, which is extended from the superclass sum. So here sum2 is my derived class or subclass, and sum is my superclass. So this main method, what it will do, obviously, as you have created the objects of a derived class in C++, the same concept is here also. You have to create the object of the subclass inside main method. So sum2, object name is obj, is equals to, how do we create the objects in Java? Sum2 class name obj, name of the object equals to, using new keyword, so new sum2. Okay, so this is going to be the constructor of the default constructor of the class sum2. This is how we create the objects of the class in Java. And then you want to call the function show one, so you can directly call it, which is a superclass sum. Okay, why you can directly call the object using the object of sum2, you are directly able to call the method of superclass sum, because you have extended sum2 from sum class. So this is the advantage, that you can directly access the methods, the variables of the superclass inside the subclass. Now, one more concept is there, subclass constructor. Okay, we have already learned the constructors in derived classes in C++ language. So let us have a look at what is subclass constructor.
constructor and how the code is written here in while we use the subclass constructor in Java also. Okay, so subclass constructor is used to construct the instance variable of both the subclass and the superclass. Because we don't create the object of the superclass, so your subclass constructor will do that job to construct the instances, means objects of both of them. Okay, and subclass keywords use the keyword super. Okay, as you can see, this word is important. Okay, that this is a keyword super, and it is used to invoke the constructor method of superclass. Because obviously if you want to create the object of the superclass, you must invoke the constructor of the superclass, right? So this job is done with the help of super keyword. Now let us look at the example using super keyword so that you will understand use of it. Here, one superclass person, which is just printing one statement person class constructor. Now I am going to extend new class from person. Class student extends person. It contains the constructor of this subclass, that is student. As you know, constructor is a special method which is having the same name as that of the class name. It is not having any return type. So here you can see person person. So this is the constructor of the superclass. Then here you can see the constructor of the subclass. Now remember, when you are writing the constructor of subclass, you must write the very first statement with the super keyword. Okay, the very first statement in your subclass constructor will be the one with which includes super keyword, and thereafter you have to write the remaining statements of this own constructor, that is student constructor or subclass constructor. Okay, so remember, whenever you are writing the subclass constructor, you have to first give call to the super. So what this super method here it is doing, it is actually calling this constructor of the superclass. Okay, so super method here helps to call or invoke the parent class constructor. Okay, and then inside the subclass constructor we are printing one line student class constructor. Now our both classes we have finished with them. Okay, we are done with them. Class person, class student, extends person in this one constructor, and this therein also one constructor. And what is the job of super? It is going to call this constructor. Now let us write the class which will include your main method. Class test, public static void main string args, and here I am going to create the object of which class? The subclass. So student s is equals to new student. This is how we create the objects. Now you can see, and your program is done. You just have to create the object because we know constructors are invoked at the time of creation of objects. So you just have to write this single line of code and all the constructors will be invoked. So what happens when this line is encountered at the compiler side? So as soon as this line is encountered, it goes here. The control passes here, means the constructor automatically invoked. Okay, the constructor automatically invoked of which class? The subclass. Now you can see the first statement in the subclass constructor is called to the super method. What is the use of super method is that it automatically invokes the parent class or superclass constructor, and hence in the output you will see this statement is printed at the first place, person class constructor, and then it comes back here. And what is there after the super keyword? After the super method call, there is one printing line, that is student class constructor. So here there is a statement student class constructor that is printed after the person class constructor. So as you can see here that we have to follow some rules while using the super keyword, and those are
Super may only be used within a subclass constructor. Okay, that super keyword is meant to be used with the subclass constructor. The call to the superclass constructor must appear as the first statement within the subclass constructor. As I've already told you, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सुपर कीवर्ड का जो आपका ये है ना, ये कॉल ये सबसे पहले आएगा इस कंस्ट्रक्टर को जब आप लिखोगे तो सबसे पहली लाइन जो आएगी इसमें वो क्या होगी, ये दिस इज द कमेंट लाइन. ओके, दिस यू कैन एक्सक्लूड फ्रॉम द कोडिंग पार्ट. ओके, सो हियर द वेरी फर्स्ट लाइन शुड कम, दैट इज विद द सुपर कीवर्ड. और उसके बाद आपको जो कोडिंग लिखनी है उस सब क्लास कंस्ट्रक्टर की वो आप लिखे, लेकिन सबसे पहले आपको सुपर मेथड का कॉलिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. So first statement, and the parameter in the super call must match the order and type of instance variable declared in the super class. So आपके super class constructor में अगर parameters होते हैं तो आपको इस super को जब आप कॉल करोगे इस मेथड को तो यहाँ पे भी उतने ही पैरामीटर्स और वही टाइप के पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे. जैसे अगर सपोज यहाँ पर्सन के सामने इंट ए ऐसा एक पैरामीटर पास किया होता तो यहाँ पे भी सुपर कॉल जब आप कर रहे होते तो यहाँ आपको सुपर 10 ऐसे कुछ वैल्यू इंटीजर टाइप की यहाँ पास करनी पड़ेगी. ओके, सो दैट इज अबाउट द super keyword and use of super inside the subclass constructor. Now let us have a look at the multi-level inheritance. Okay, so here you can see you perform the inheritance level by level. So when a subclass is derived from a superclass and a subclass is further derived from that subclass, so it acts as a superclass for some other subclasses. So it creates a multi-level hierarchy. So here you can see A is a superclass and B is an intermediate superclass and C is its subclass. So C के लिए B एक super class है, लेकिन B already किसी के लिए derived class है जिसकी super class A है. Okay, so you can compare this multi-level inheritance with this relationship of grandfather, father, and child. How do we write it in syntax? Class A, class B extends from A, and then class C extends from B. This is the syntactical representation of this diagram. Hierarchical inheritance, we use it when we want to have the common properties on the multiple classes. So just have that one class which includes all those common properties and then inherit from such class multiple subclasses. Okay, so as you can see here, account is the superclass, and from that we have inherited the multiple subclasses: savings, fixed deposit, current. Obviously they are going to inherit the common properties which are inherited basically from the account, that is mainly account number or customer ID, right? And then fixed deposit can again further be inherited by several subclasses like short term, medium term, and long term. So this example will make you understand the concept of hierarchy. Okay, hierarchical inheritance. Then method overriding. So if we are studying inheritance, you must study this concept also. Method overriding means there may be cases when there are same named methods, okay, in both the parent class and the child class. So in that case, what happens in Java, basically all the superclass methods are virtual, means they never execute if there is a same named method present in its child class, and the child class method will be invoked always. Okay, so remember this is known as overriding of method because you're already having the same named method in parent class, you are redefining it inside the child class, and your child class method is going to execute by the object of the subclass, that is child class, and this is known as overriding because you are overriding the method that is already being written in the superclass. So superclass method is never executed if such thing appears in a program. You'll understand this concept with this example. See, class sum a equals to 10, b equals to 20. I'm going to write one method inside it, show, which is printing the value of a and b separately. Okay. Now class sum2, which extends from sum. Okay, sum2 extends from sum.
Now I equals to 30, j equals to 40. These two values I have initialized here. Now void show. I am going to override this method. Overriding means you are going to use the same name again. And this method overrides means ओवरराइड होना मतलब कि इसे एग्जीक्यूट ना करते हुए खुद एग्जीक्यूट होना ओके दैट इज द ओवरराइडिंग यू आर ओवरराइडिंग दैट मेथड मतलब ये शो कंसीडर मत करो ये शो हमें कंसीडर करनी है इन द फाइनल कॉल so I'm going to rewrite the same method okay the method with same name that is show and different coding that is this will print only the value of I and j that is 30 space 40 ऐसे प्रिंट होके आना चाहिए अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से अगर हम कॉल करते हैं अगर हम सिर्फ शो को कॉल करते हैं तो कौन सी रन होगी ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक स्टैटिक void main where we have created the object of the class sum2 okay herein you can add one more statement that is class because as I've told you you have to include okay this is completed here and this is okay they have included the sum2 the main method inside the sum2 okay in this program we have included the main method inside the sum2 so it is valid. Now here we will see that if we are creating the object of the subclass inside the main method, then which show should be called? Which show? This one or this one? So the rule in Java says that always the subclass method, okay, with the same name as that of the superclass method. So this method, subclass same named method will override this one. Okay, so what will happen here, this show method is going to be executed. So obj dot show आप जैसे obj जो आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उससे आप अगर ये मेथड कॉल कर रहे हो शो तो ऑब्वियसली आपकी कौन सी मेथड कॉल होगी this method will be sorry तो आपकी कौन सी मेथड कॉल होगी यहाँ पे जो sum2 में आपने लिखी है मेथड वही मेथड कॉल होगी तो यही इसमें एक नई चीज है और एक डिफरेंस भी है अगर आप इसमें C++ में जाके देखोगे तो आपको याद होगा हमेशा बेस क्लास की ही मेथड कॉल होती है लेकिन ये एक डिफरेंस है जावा में हमेशा सब क्लास की मेथड कॉल होती है जिसका नाम सेम है अगर दोनों का नाम सेम होगा तो सब क्लास की ही मेथड एग्जीक्यूट होगी तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो होगा 30 space 40 and not this one 10 20 okay then let us have a look at the final keyword how do we use the final keyword in three different ways we can use it अगर आप लोग inheritance पढ़ रहे हो तो आपको ये भी चीज पढ़नी जरूरी है final keyword का use क्या है तो final keyword हम along with the data field along with the method and along with the class use कर सकते हैं ठीक है तीन different ways में along with the data field यानी कि मेंबर डेटा उसके बाद मेथड यानी मेंबर फंक्शन और क्लास के साथ अगर आप डेटा फील्ड को फाइनल कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है यू डोंट वांट इट्स वैल्यू टू बी मॉडिफाइड बाय द सब क्लास अगर आपकी पेरेंट क्लास में ऐसी कोई वैल्यू है जो आप चाहते हो कि कोई भी आगे इनहेरिट होने वाली क्लास उसे चेंज ना करे कभी भी तो यू कैन मेक इट फाइनल द फाइनल वैल्यू सो हाउ टू मेक इट जैसे आप यहाँ देख सकते हो यू जस्ट have to the final keyword in front of that variable declaration and remember you have to initialize its value also and this value will be treated as a constant in all the subclasses inherited फ्रॉम सच सुपर क्लास तो अगर आपकी कोई क्लास है और जिसमें आप चाहते हो कि उसकी जो डेटा फील्ड वैल्यू है एक आई की वैल्यू 5 ही होनी चाहिए आगे चल के कोई भी डिराइव क्लास उसको चेंज नहीं करेगी आई की वैल्यू को तो आप ऐसी वैल्यू को फाइनल कर सकते हैं बाय जस्ट राइटिंग अपेंडिंग द कीवर्ड फाइनल इन फ्रंट ऑफ इट देन राइट डाउन द रेगुलर सिंटैक्स इंट आई इज इक्वल्स टू 5 अब ये आई की वैल्यू 5 ही रहेगी चाहे आप बेस क्लास से 100 क्लासेस इनहेरिट करो कोई भी सब क्लास जिनमें ये वैल्यू इनहेरिट होके जाएगी वहां पे इसकी वैल्यू 5 से अदर देन दैट चेंज नहीं होगी ओके 5 ही रहेगी सो इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट इन द होल प्रोग्राम देन फाइनल मेथड तो मेथड अगर आप चाहते हो कि कभी भी ओवरराइड ना हो
ठीक है. Then means always you will be having this, you will not able to manipulate this method, and you don't want it to be overridden by the other derived classes. मतलब ये नाम की मेथड रीडिफाइन नहीं होनी चाहिए किसी भी नेक्स्ट subsequent derived classes में. Then you can make this method as a final method. Okay, तो अगर आप method के साथ फाइनल कीवर्ड अपेंड करते हो तो इसका मीनिंग ये है कि ये मेथड कभी भी आगे चल के रीडिफाइन बाय द सब क्लासेस नहीं होगी. ओके, और ओवरराइड नहीं होगी. रीडिफाइन नहीं होगी मतलब ओवरराइड भी नहीं होगी. इस नाम की कोई भी मेथड आगे इनहेरिट होने वाली सब क्लासेस में डिफाइन नहीं कर सकते आप. दैट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडिंग फाइनल कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ द मेथड नेम. ओके, then final class, if you want that this base class is final और इसके आगे ये inherit नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे अभी कोई भी next derivation नहीं होगा, then you can make such class as a final class. Final class का meaning ये होगा कि ये class अभी final है और इसके आगे इससे कोई भी दूसरी class inherit नहीं हो सकती. So you just have to append the final keyword in front of that class name. Okay, so class base and just append the keyword final. Okay, so what it will say, it means that you can't inherit the base class further. So class derived अगर आप extend base करते हो तो यहाँ आपको error आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे error बोलेगा कि base class जो ये जिसका भी नाम है, ये जो भी class है, ये एक final class है, इसे extend नहीं कर सकते हैं आगे. ठीक है. So these are the uses of final keyword. You can use it along with the data field, you can use it along with method, and you can use it along with the class name. Then abstract class and methods. So what is the abstract class? Abstract class is the one whose objects can't be created, okay, and abstract classes cannot be instantiated, but they can be subclassed. They are made for the purpose of inheritance. तो अगर आपको सिर्फ inherit purpose के लिए कोई class बनानी है, so make it as an abstract class. Okay, so what it will contain? It will contain the abstract methods. Abstract methods की body ऐसी होती है. See, this is the syntax of the class. How do we declare the abstract class? You just have to write the abstract and then class name. Okay, and it will include the abstract method. So abstract method is the method which is declared without any implementation, means it will have no coding inside it, like this abstract, then write down the return type of the method, then method name, and then inside the parenthesis include the list of parameters. तो ये क्लास हम क्यों यूज करते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस C++ में भी पढ़े हैं और वही कंसेप्ट यहाँ भी है उसका. ठीक है, जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो सेम आपने वहाँ कंसेप्ट पढ़ा था वही कंसेप्ट यहाँ भी है, वही मीनिंग है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ इंस्टेंशिएट करने के लिए बनाई गई है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती है. जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वहाँ प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखा था और प्योर वर्चुअल फंक्शन हर इनहेरिट होने वाली क्लास को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है, उसके लिए कोड लिखना पड़ता है. लेकिन वही चीज यहाँ पे दूसरी है, इसे यहाँ हम प्योर वर्चुअल फंक्शन टर्म नहीं यूज करते, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे लिखी जाती है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेथड एंड जस्ट सेमीकोलन आफ्टर दैट. ओके, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स एंड सेमीकोलन. इसका मीनिंग ये है कि हर इनहेरिट होने वाली, इससे नई इनहेरिट होने वाली सब क्लास को ये मेथड डिफाइन करनी ही पड़ेगी. ओके, so this is what the use of abstract class made for inheritance purpose, and they will include abstract method which has to be implemented by each of its derived class. Then let us have a look at the interface. क्योंकि हमने अभी इंटरफेस पढ़ा है तो हम अभी हमने इनहेरिटेंस पढ़ा. ठीक है, इनहेरिटेंस में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े, उसमें कुछ कंसेप्ट्स पढ़े लाइक सुपर कीवर्ड, हाउ टू यूज इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरराइडिंग मेथड्स, how do we do it. Okay, now I think you must learn this concept also here only. Okay, so इंटरफेस जो है ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेकेंडरी अप्रोच है, क्योंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम जावा में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. हम एक ही क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट कर सकते हैं
ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन हम एक से ज्यादा क्लासेस से नई क्लास नहीं इनहेरिट कर सकते जावा में। और क्योंकि सी प्लस प्लस में जब इम्प्लीमेंट हुआ था मल्टीपल, सो देयर वर मेनी कॉम्प्लिकेशंस, एंड दैट्स व्हाई दैट कंसेप्ट वाज रिमूव्ड बाय क्रिएटिंग द मैकेनिज्म इन जावा। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म यहाँ नहीं है, उसे ऑप्शनल एक नई चीज इसमें ऐड हुई है, दैट इज इंटरफेस। Okay, so interface is also a kind of class. Okay, and we will have a look at the details: how do we write it, how do we use it, and how the program is written using the interface, that we will see here. So an interface in Java is a blueprint of the class. Now what does it include? So interface में स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूँ तो इंटरफेसेस में फाइनल डेटा फील्ड्स और कौन सी मेथड्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मतलब ऐसी मेथड्स जिन्हें हर सब क्लास को डिफाइन करना ही पड़ेगा। ओके, और स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं मतलब ऐसे डेटा फील्ड्स जिनकी वैल्यू कोई भी डिराइव्ड क्लास चेंज नहीं कर सकती है। Okay, so interfaces, they are made for the purpose of inheritance, and they will be having the static constants and abstract methods. Interfaces in Java, it is a mechanism to achieve abstraction. Actually, in the other words, we can say there can be only abstract methods in Java interface and not the method body. तो abstract method की वैसे भी body नहीं होती है, आपको पता है, हमने अभी syntax देखा। लेकिन इसमें सिर्फ ये inheritance purpose के लिए बनाए जाते हैं interfaces। तो आप एक interface से क्या कर सकते हैं, दूसरी class में नई class implement कर सकते हो, उसमें उस class में आप इसे use कर सकते हो। तो आपको वहाँ ये abstract methods define करनी पड़ेगी, जो भी class इनसे implement होगी। It cannot be instantiated. हम interface के objects create नहीं करते, just like abstract class. Interface is not extended by a class, it is actually implemented by a class. Okay, तो यहाँ हम extend word use नहीं करते हैं। जब भी हम interface से नई class, if you want the properties of the interface to be inherited by the class, then we use the term of implement. Okay, we use the term implement and not extend. That you will see when I will show you the syntax. An interface can extend multiple interface, और एक interface बहुत सारे interfaces से extend हो सकता है। मतलब एक interface में बाकियों की properties हो सकती है multiple interfaces की, और फिर ऐसे जिसमें multiple interfaces include है, उससे आप एक नई class implement कर सकते हो। So let us see how do we declare the interface. तो interface basically सिर्फ एक class जैसा ही kind of a class ही होता है, लेकिन इसके कुछ rules है, कुछ इसमें changes है कि उसके members क्या रहेंगे और उसकी methods कैसे रहेंगी, उसके बारे में कुछ rules and regulations है that you must keep in mind. Okay, so the interface keyword is used to declare an interface. Here you can see public, okay, interface, and here you have to write the name of interface. So this interface is definitely going to be the public so that it can be visible to all inside the program. And in the interface you include the fields and methods. So which type of data fields will be there in interface? Static fields and final, means there will be only one copy of them created, and there will be final means there will be constants. Okay, final आपने अभी देखा कि ऐसे constant की value हम change नहीं करना चाहते आगे चल के, जितना भी inheritance perform हो तो हम उसे final बनाते हैं। तो ऐसे ही data fields या variable इसमें होते हैं, और इसमें abstract methods होती है। abstract method जिनकी कोई body नहीं होती है, लेकिन वो आगे चल के inherit होने वाली classes में define होती है। ठीक है, so these are the members of interfaces. Okay, आपको ये कीवर्ड यूज करना है और उसके सामने नेम ऑफ द इंटरफेस लिखना है, और फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, and inside this the declaration of the fields and method. Now as you can see here the example of interface, कीवर्ड लिखा है, नाम लिखा है प्रिंटेबल, ठीक है, ये नेम है उस इंटरफेस का,
और उसके अंदर हमने देखो यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन किया, इंट मीन इज इक्वल्स टू 5 एंड वॉइड प्रिंट। तो ये जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे इंट मीन इक्वल्स टू 5 लिखो, और सेम मतलब जैसे आप नॉर्मली मेथड लिखते हो वैसे आप मेथड लिखो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरफेस है, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसके जो वेरिएबल्स होंगे उन्हें पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही ट्रीट करेगा, और इसकी जो मेथड होती है, क्योंकि ये इंटरफेस है तो कंपाइलर इनको बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही ट्रीट करेगा। Okay, so remember the fields are always static and final, and the methods are always abstract in interface, and therefore you don't have to explicitly mention these keywords inside the interface code, because it is understood by the compiler that since this is an interface, this is by default। ओके, सो ये कोड और ये कोड ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये कंपाइलर का वर्जन है जबकि ये हमारा लिखने का वर्जन होगा यूजर साइड का। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप ये हर बार लिखो, क्योंकि कंपाइलर को वो अज्यूम्ड है कि यहाँ पे आपको आपने मेंशन कर दिया ना कि वो इंटरफेस है, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसके पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही कंसिडर करेगा और इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट ही कंसिडर करेगा। So as an interface is implicitly abstract. So no need to use the abstract keyword while declaring it. One example of interface item constants. Okay, here how do we declare it? And then opening and closing braces. Inside this we will declare the variable. सिंपली आपको यहाँ पे एंड कोड लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कांस्टेंट ही डिफाइन करना है, रिमेंबर। सो यू हैव टू इनिशियलाइज द वैल्यू बिकॉज दिस आर गोइंग टू बी द फाइनल वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई यू मस्ट इनिशियलाइज देम। देन स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू फैन, तो ये जो नेम स्ट्रिंग टाइप का है वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमेशा फैन ही रहेगी। whatever number of inheritance will happen in future from such interface, okay, the value won't change, both of this. And then void display, but this is actually an abstract method, so method declared in the interface. So this display method must be redefined by each of the class that will be implemented from the item constant interface. What is the name of this interface? Item constants. नाउ एक्सटेंडिंग इंटरफेस मतलब जब एक इंटरफेस से व्हाट यू आर गोइंग टू इनहेरिट, सी वन क्लास से एक, जैसे एक क्लास है तो अगर इससे आपको इनहेरिट करनी है नई क्लास तो हम कैसे लिखते हैं जावा में? बी एक्सटेंड्स क्लास बी एक्सटेंड्स फ्रॉम क्लास ए। ओके, सो क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, ऐसे लिखते हैं ना। तो वैसे ही इंटरफेस से अगर दूसरा इंटरफेस आप क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं हम इंटरफेस, वन इंटरफेस एक्सटेंडेड फ्रॉम द अनदर इंटरफेस। लेकिन अगर आप एक इंटरफेस से दूसरी क्लास इनहेरिट कर रहे हो तो तब हम क्या बोलते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर इंटरफेस से, अगर आपका इंटरफेस है सपोज ए, तो अगर इससे कोई क्लास आप इनहेरिट करना चाहते हो बी नाम की, तो इसे हम बोलेंगे कि क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए। ओके, सो क्लास बी इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस ए। तो आपको ये दो जो कीवर्ड है इनका डिफरेंस ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरफेस कैन एक्सटेंड द अनदर इंटरफेस just like classes, and we use the extend keyword. And interfaces actually जो क्लासेस होती है वो इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेसेस को। तो जब हम क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम द इंटरफेस, देन वी नीड टू यूज व्हिच वर्ड? इम्प्लीमेंट। ओके, so as you can see, class can be extended from class, but class can be implemented from interface. Interface can be extended from interface. So interface name2 extends name1। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे name2 नाम का इंटरफेस जो है वो एक्सटेंड हुआ है name1 नाम के इंटरफेस से, and then include the body of name2 interface. Now and remember, whenever we are going to extend the one interface from the another, obviously this interface will include all the fields and variables of this interface. Okay, but it is not going to redefine the abstract methods of
name one interface, because this is also ultimately interface, no? So it is also include the abstract methods only. Implementing interfaces. Now here we will see how we inherit class from the interfaces. So interfaces are just can be just used as super classes whose properties are inherited by the classes. So this is how you can see, students, that this is how we are trying to implement the multiple inheritance. From several, we are going to inherit one. Okay, that is the multiple inheritance. So here actually we create the multiple interfaces, and from that multiple interfaces we implement one class. So this is how we have a secondary approach to implement the multiple inheritance in Java. So, and here you can see class name implements interface name. So whenever you want to inherit a new class from the interface, you have to use which keyword? Implements keyword, and not extend. Okay, you have to use implements keyword. So class name implements interface name, and then here you have to write down the body of this class name. Let us have a look at the example. How do we implement the interface? सपोज आपके पास एक इंटरफेस है ड्रॉएबल, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी है वॉइड ड्रॉ, ठीक है। फिर हम एक नई क्लास इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा ये क्लास रेक्टेंगल। यहाँ आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है? इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ड्रॉएबल इंटरफेस, क्योंकि ये इंटरफेस है, ठीक है। क्लास रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स ड्रॉएबल। अगर ये क्लास होती सपोज ड्रॉएबल, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स ड्रॉएबल। लेकिन क्योंकि ये इंटरफेस है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? क्लास रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स ड्रॉएबल। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इंटरफेस है इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या बोलती है कि इन्हें रीडिफाइन करना ही पड़ता है हर इनहेरिट होने वाली क्लास में। तो यहाँ हम ड्रॉ को रीडिफाइन करेंगे, पब्लिक वॉइड ड्रॉ, और यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखेंगे ड्राइंग रेक्टेंगल, बस एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? ओके, इस प्रोग्राम का आउटपुट ड्राइंग रेक्टेंगल प्रिंट होके आना चाहिए। ओके, बिकॉज what it will do whenever you can include here the main method. Okay, and inside main when we will create the object, the output will be this one. Okay, so this method will be executed. Now let us have a look at one more interface implementation. Suppose there is one interface printable which is having the abstract method print. Another interface, ये पहला हुआ, ये है दूसरा interface showable, इसमें एक abstract method है show. अब हम एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस से इंप्लीमेंट कर सकते हैं separated by comma. Okay, so class A7 implements from printable interface and comma showable interface. क्योंकि ये इन दोनों से इनहेरिट हो रही है, इसलिए हमें इन दोनों की जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है वो इसमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम प्रिंट मेथड डिफाइन करेंगे प्रिंटेबल इंटरफेस की, जिसमें हेलो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हम शो मेथड डिफाइन करेंगे शोएबल इंटरफेस की, जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं वेलकम। अब हम एक नई क्लास लिखेंगे जिसमें हमारी मेन मेथड होगी। नाउ रिमेंबर, हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? सी हियर A7 क्लास का हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है obj इक्वल्स टू न्यू A7। ओके, सो A7 क्लास का ऑब्जेक्ट obj create हो गया है. So actually obj is a reference variable which is referring to the object of the class A7. Now you can call these methods obj.print and obj.show. So what it will print? It will print hello space welcome. Okay. And I think you should study the from the textbook also. Okay, don't just read the PPTs, but refer the textbooks also for studying the concept in detail. Okay, and there is one more thing.
If you are having the multiple classes inherited from these interfaces, then what you can do, you will be creating the objects of those classes, but to access the method of the particular interface, you need to refer to the object of the interface type and not the class type. So what I mean to say is, if there is a, suppose यहाँ सपोज और एक क्लास होती, ठीक है, क्लास A7 है और सपोज एक क्लास होती क्लास A8, और अगर हम A7 का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और क्लास A8 का भी ऑब्जेक्ट बना रहे होते, और अगर हमें रिस्पेक्टिव मेथड्स कॉल करनी होती इसकी, सो व्हाट वी कुड हैव डन इज दैट वी हैव टू क्रिएट द first the object of the interface. ओके, दैट इज सपोज हमारा जो इंटरफेस है प्रिंटेबल, तो प्रिंटेबल, सपोज यहाँ एक ही इंटरफेस है प्रिंटेबल, तो आप प्रिंटेबल का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन यू कैन असाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास दैट इज obj. सपोज A7 का जो ऑब्जेक्ट है obj, मेक इट असाइन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंटेबल. सपोज प्रिंटेबल का प्री ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो p इज इक्वल्स टू obj, एंड देन you can directly call the method using p dot and method name inside this class, inside the class from E7. Okay, so this is also the case when you are trying to implement the interfaces. Okay, and you are implementing the classes from multiple interfaces. So remember, there is a program you can see in detail on page number 397, so just go through that, okay, once, so the clear idea you will get here. So I have not included, I have kept it simple so that you won't be confused, but I would recommend you to go to the page number 397 and refer that program of implementing interfaces, where you will see how the object reference changes while calling the methods from the respective class. Then there is a next concept that you must learn is of this keyword. Okay, this here, this this is the keyword that we use in Java for the multiple purposes. There are many more uses, but the use that you have to learn in here in your book is that how do we use this keyword to refer to the current object. Okay, current objects data field, current objects methods. So in Java, this is the reference variable which refers to the current objects field, and it will invoke the current objects method. It will try to access, or it will be able to access the current objects data fields. Okay, so let me make you understand the concept of this keyword using this example. Okay, so here is a class test. Inside that, two variable of type integers declared. Now here we will be writing one parameterized constructor test int a comma int b. तो इससे पहले जो हमने प्रोग्राम्स देखे, हम वहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे हम एक अलग से वेरिएबल, ये जो भी a इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, ये जो पैरामीटर पास हो रहा है वो लिखते थे. ओके, a इज इक्वल्स टू a, b इज इक्वल्स टू b. ऐसे हम C++ में पहले प्रोग्राम लिखते थे, या जावा में भी हमने जितने कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम थे उसमें हम ऐसे ही परफॉर्म करते हैं टू इनिशियलाइज द वैल्यू. बट यूज ऑफ दिस कीवर्ड इज दैट it is going to, what it is doing, see, it is kind of a reference variable. तो directly यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, reference variable create हो रहा है जो उस current object को क्या कर रहा है, refer कर रहा है. So it is able to directly access the fields of that current object. तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये लिखना है this dot a is equals to int. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो current object जिसके लिए ये constructor invoke हो रहा है उसके a variable में ये जो भी वैल्यू यहाँ पे पास होगी उसे असाइन करो. Similarly, this dot b is equals to b. Okay, it will initialize the value of b data field of the current object. Then in this we are going to write one display function which will print the value of a and b. Now the main method में अभी देखो हम यहाँ object create कर रहे हैं test class का, and inside that I am going to call the constructor
How do we call the constructor here while creation of the object? So new test of, यहाँ आपको constructor में कितने parameters है, 2 integer type के parameters है, तो इतने pass करने पड़ेंगे at the time of creation of object. So here you can see 10, 20, 2 integer type values are passed. So what will happen here? What will happen here? Your test object, okay, wherever it is created, so this will perform what? This will help to initialize the values of the current objects data frames. So automatically the 10 value will be initialized into A and 20 value will be initialized into B. And hence here when we will be invoking the display function using the object name, you will see here A equals to 10 and B equals to 20. So remember the use of this keyword. There are many more uses. You can learn all of them in detail if you wish to. But I wanted to tell you this one of the important concept, that this is used to refer the instance data field. This is used to invoke the current instance, current objects method. You just have to use it along with the dot operator and the keyword. Now, the next concept that you have to learn in Java is the use of arrays. How do we initialize them? How do we declare the arrays? Okay, so array, as you know, it is the collection of the same data type elements, and they are referred as, if we are having the array with the name number, then we specify the size of that array, and then we initialize the values to the elements stored in that array. Here you can see how do we declare. We write down the name of the array, then the subscript, that this is the name of the array, my list, and here is the data type of that array. And how do we create in Java the array? We create using the new. Okay, so new double of 10. So here we are specifying the size. So what is happening at the back end, that you can see here in the diagram. So size 10 है जिसकी ऐसे my list नाम का, ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल, और ये क्या हो गया, यहाँ पे अरे क्रिएट होगा, और इसके एलिमेंट्स हम रेफर कैसे करेंगे, माई लिस्ट ऑफ 0, माई लिस्ट ऑफ 1, माई लिस्ट ऑफ 2, माई लिस्ट ऑफ 3 अप टू माई लिस्ट ऑफ 9. तो इसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं. ओके, 0 1 2. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो माई लिस्ट ऑफ 5, तो ये क्या हुआ, अरे एलिमेंट एट द स्टोर एट द इंडेक्स 5. Okay, so what is this 34.33? This is the element's value stored at that location, and how to access it, using the index, that is my list of 5. Okay, so this is how the array elements are stored, this is how they are referred using indexes, and this is how we declare and initialize in Java the arrays. Okay, so basically just जितना आपने अभी तक देखा है, हम यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं, यहाँ अरे का नेम लिखते हैं, then opening and closing subscript देते हैं, ठीक है. This is how we declare the array. But here you have to use the new keyword while creating the array in Java. So declaration of the array, the place of this subscript can change. Okay, it could be here also after the name of array, or it could be here also before the name of array. That is acceptable, both formats. Here you can see int subscript, opening and closing subscript, and array name. How do we create the arrays? This is just a declaration. Okay, how do we create? Actually creation, जैसे आपको मैंने बताया कि object भी create करना हो तो using new keyword ही किया जाता है. So here you can, how do we create, using the new keyword again. यहाँ आपको नाम लिखना है array का, और उसके बाद new keyword is equals to new data type, and then you have to specify the size of that array. So array name is equals to new int of 5. And how do we access the array elements? Using the for loop. So just by writing the for loop, you can assign the value, you can access the values of the arrays. We have already seen the similar examples of accessing the array elements in C++ also. So you are familiar with the use of for loop for accessing the elements. Here you can see, if I wish to access the elements, we can use the variable length. So what is this length variable here written inside the condition, I less than my list dot length. So remember, in Java, each array stores its size in the variable length. Okay, it is by default allocated
the inside are stored inside the length variable for every array that you create in Java. So length variable अगर आप directly use कर रहे हो तो it will provide you the size and hence you can perform the subsequent manipulations over that array size. My list dot length, इसलिए यहाँ पे ये जो लिखा है directly my list dot length, it is actually computing the length of this array. तो इसकी length क्या है 10. So I less than my list dot length is equivalent to the statement I less than 10. तो ये जो लूप है आपका ये चलेगा I equals to 1 से लेकर 9 तक. ओके and it will assign the values to the respective array element. And this for loop will print the values. This for loop will initialize the value and this for loop will print the values of array. Array initialization, in one step you can do this whole thing that I have told you in 3 steps की declaration ऐसे होता है, फिर creation ऐसे होता है और initialization ऐसे होता है. तो वो सभी चीजें आप एक ही लाइन में कर सकते हो. Simply write down tuple subscript name of the array equals to, यहाँ directly हमने values लिख दी. ओके 1.9 2.9 मतलब इसकी साइज भी समझ में आ गई और इसमें वैल्यूज भी स्टोर हो गई. तो ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है, सी यू कैन डायरेक्टली राइट दिस और दिस. सी डबल माय लिस्ट इक्वल्स टू न्यू डबल 4. सो ये जो आपने इतनी एक लाइन लिखी है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस मच लाइंस कि ये क्रिएट किया और उसके बाद हर एलिमेंट को उसका इंडेक्स लिख के वैल्यू इनिशियलाइज की. दिस ओके. सो दिस ऑल यू कैन डू इन द सिंगल लाइन. Similarly for the two-dimensional arrays, right? Two-dimensional arrays we used to store which are stored in the matrices form. So how do we declare it? Data type same syntax है, बस यहाँ पे आपको 2 subscript include करने हैं. So reference variable equals to new data type and 10 10. मतलब यहाँ 10 by 10 का array create हुआ है. And we can do using the shorthand notation. We can perform the same things. You just have to write int 2 subscripts array name equals to, just initialize the values inside the brackets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So this is same as this thing. इंट अरे न्यू इंट, पहले ये बनाना क्रिएट करना, उसके बाद फिर 0 0 में 1 0 1 में 2, क्योंकि ये ऐसा है ना, यहाँ पे 0 1 फिर 0 0 फिर 0 1 मतलब 0th रो और 0th कॉलम, फिर 0th रो फर्स्ट कॉलम, फिर 0th रो और थर्ड कॉलम, राइट. सिमिलरली 1 0 मतलब फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन. यहाँ पे एलिमेंट्स जो है ओके. एंड यू कैन डू ऑल दिस. ओके ये जो भी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही चीज आप यहाँ शॉर्ट हैंड नोटेशन में ऐसे परफॉर्म कर सकते हो. तो ये इतनी सारी चीज लिखने के इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन use this shorthand notation. Okay. Then string, there is one more concept in Java, that is string. So string is treated as an object in Java. It is having hold some special meaning in Java. They are not treated as the character. Yes, you know that string is a sequence of characters included inside the double quotes, right? But inside the Java language, string is having special treatment and they are treated as an object. Okay, so you can perform the manipulations over them, and whatever the concepts apply over to the object, they applies to the string also. So string is an object basically of the string class and string buffer class. ये built-in classes है, ठीक है. Just इन दोनों classes में difference ये है कि string class जो है वो fixed length के string create करने के लिए object बनाई जाती है, और string buffer class जो है वो variable या flexible length के string object create करने के लिए बनाई जाती है. So here you can see
String as string object is a constant object and it can't be changed using a reference to it. Okay. Then cleaning up the unused object. This is one more topic in Java. As we know that we create the objects in C++ also we have created, and we use the constructor and destructor. We know the job of constructor is to create the objects, while destructor we explicitly mention to destroy those objects that we have created inside the memory, and that those are taking up the space inside the program. Okay, and that's why we must delete the objects that we have created. Now, similarly, in Java, we have one more provision that we don't have to explicitly delete the objects created. The garbage collection system there in Java, which is an automatic garbage collection system, which runs every time to check the less referenced objects. It identifies them and it calls the finalize method for that object. What is the job of finalize method? So finalize method is used to free up the resources held by the object. Okay, तो basically Java में ऑब्जेक्ट जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो इसलिए इफिशिएंटली होता है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है जो सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में नहीं थी. ओके, सो ये गार्बेज कलेक्शन का ही जॉब होता है. जेवीएम में जो होती है, जो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करती है ऐसी मेमोरी जो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है. ओके, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत देर से रेफरेंस नहीं हुए हैं बाय एनी मेथड, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फिर आइडेंटिफाई करके उन्हें सेपरेट किया जाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए फाइनलाइज मेथड कॉल की जाती है. तो फाइनलाइज मेथड जब भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होती है तो वो उस ऑब्जेक्ट के होल्ड किए हुए सारे रिसोर्सेज को फ्री अप करती है. ओके, सो या रिक्लेम करती है. So that is the use of garbage collection system in Java. So just remember the use of finalize method along with the object name that helps to clear the destroy the objects in Java. So same job that what is performed by the destructor in C++, you can perform it with the garbage collection system in Java. Okay, so this is it. So I have tried to cover all the basic points of the sixth unit. If you are having still any doubts, you can contact me personally and ask me the doubts. Okay, just go through this and carefully listen everything what I have mentioned, the important points here, and please read the textbooks because I can't cover everything from the textbook. Okay, it is not possible, but you can read everything from the textbooks. So wherever you find difficulty in any topic, understanding any topic, just go to the textbook and once read the complete topic from the textbook. That will be my advice for you. Okay, thank you.